Assalamu alaikum. Welcome class to the next lecture of software engineering. The topic that we are going to discuss in today's lecture is the prototyping model, which is basically a evolutionary process model. And these slides are again based upon the software engineering book, which is titled as Software Engineering: A Practitioner's Approach by Roger S. Pressman. So let us start the discussion of the prototyping model. Software is rarely a static entity, it evolves. Class, think about the last time you tried to explain a complex idea to someone. Usually, your first explanation isn't the best one. जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स बात कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो जो फर्स्ट इनिशियल एक्सप्लेनेशन है दैट इज नॉट द बेस्ट वन. इट इवॉल्व्स एज यू टॉक. जितना आप उस बारे में बात करते हैं उतना आप उस चीज की डिटेल में जाते हैं उतना उसको बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. Software is like the same thing. As they say, software is not a static entity, it evolves. Traditional linear models often fail because requirements change. Market deadlines are tight, or the full scope of the product is not understood at the start. तो जैसे मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को एक्सप्लेन करने की एग्जांपल दी कि कभी भी पहली एक्सप्लेनेशन या पहली जो हमारी तरफ से डिस्क्रिप्शन होती है दैट इज नॉट एनफ. as we talk about it more, we explain it more, so हम better way में अपने ideas को communicate कर सकते हैं. so यही nature software की है कि initially हमारी जो requirements हैं या तो वो clearly या fully available नहीं होती या फिर वो understandable नहीं होती, वो fuzzy होती हैं, उनमें confusion होती है, उनमें ambiguity होती है. so जैसे मैंने कहा कि software evolves with the passage of time. So, ऐसी नेचर को डील करने के लिए वी यूज एवोल्यूशनरी मॉडल्स because the idea of a straight line to a perfect product is often a fantasy. No, it's not like a straight line. आप जैसे जैसे प्रोडक्ट में काम करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है वो इवॉल्व करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग में जैसे जैसे इजाफा होगा, नई रिक्वायरमेंट्स आएंगी, फ्रॉम यूजर्स पर्सपेक्टिव भी वो इवॉल्व करेगा और फ्रॉम डेवलपर्स पर्सपेक्टिव भी वो इवॉल्व करेगा. So, as the second line says, the evolutionary process models are iterative. They are designed to develop increasingly more complete versions of the software over time. तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती जाएंगी. जैसे मैंने कहा कि both from the client's perspective and the developer's perspective, so a more complete versions of the software would be delivered to the user. And then, very interestingly, Frederick Group, which is a very famous writer, said, उनका एक famous quote है कि plan to throw one away, you will do that anyway. So what it means? It means Brooke ये कहना चाह रहे हैं कि your first attempt is often a learning experience whether you want it to be or not. कहते हैं जब आप कोई काम करेंगे पहली दफा तो जो आपका पहला इनिशियल अटेम्प्ट होता है वो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, उसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उसके बाद आप उस एक्सपीरियंस को, उस अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हुए यू विल हैव टू रीडू दैट थिंग, रीबिल्ड दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द स्क्रैच. चाहे आप ऐसा चाहें या ना चाहें, यू विल डू दैट एनीवे. सो प्रोटोटाइपिंग जो है वो हमारे पास एक एवोल्यूशनरी मॉडल है, ऐसा मॉडल जो कि सॉफ्टवेयर की एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, जो कि इस कॉन्सेप्ट की बेस पर बनाया गया है कि सॉफ्टवेयर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व करता है और वक्त के साथ साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स गेट क्लियर. ठीक है, और उसके जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो भी इम्प्रूव होते हैं एंड मोर कंप्लीट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, राइट. सो prototyping is the model that supports the evolutionary nature of the software development. अब हम आते हैं अपने एक्चुअल
topic की तरफ, which is the prototyping model. So what is prototyping? The prototyping paradigm is used when a customer defines general objectives but lacks detailed functional or feature requirements. It is also used when developers are unsure of technical aspects such as algorithm efficiency or the best form of human machine interaction. So जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम इनिशियल एम्बिग्विटी या इनिशियली चीज़ों के ना क्लियर होने की बात करते हैं, so that is not only from the client's perspective. So it is like from the client's perspective, and at the same time developers also face these sort of situations. As it is clearly written in the slide, you can see that normally what happens is that the customer is not initially not clear about the requirements, and at the same time the developers are unsure about the technical aspects of the system. So have you ever had a client say, I'll know what I want when I see it? So that is a perfect time for prototyping. It's for those fuzzy situations. जैसे second line में कहते हैं ना कि prototype is a mock-up or a preliminary version of the system that helps stakeholders visualize the end product when the requirements are fuzzy. फजी रिक्वायरमेंट्स कहते हैं कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट्स को। तो जब रिक्वायरमेंट्स आपके पास क्लियर ना हो, कंफ्यूजिंग रिक्वायरमेंट्स हो, तो प्रोटोटाइप एक ऐसा मॉकअप वर्जन है, एक ऐसी रिहर्सल है आई वुड से, या एक प्रिलिमिनरी वर्जन है जो कि स्टेक होल्डर्स को हेल्प करेगा कि वो अपने प्रोडक्ट को विजुअलाइज कर सकें कि हाउ द प्रोडक्ट विल एक्चुअली लुक लाइक. सो एज आई सेड के when these are the situation, it is perfect time for prototyping. It's for those fuzzy situations where the details are missing. Maybe, जैसे मैंने पहले कहा, maybe the client is not sure how the dashboard should look like. Or maybe you, जो कि developer हैं, are not sure if the specific algorithm will be fast enough. So दो एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं. एक क्लाइंट साइड से कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट को अपने डैशबोर्ड का लुक जो है वो कंफर्म नहीं है कि कैसा होना चाहिए, या एज अ डेवलपर यू डू नॉट नो कि जो एल्गोरिथम मैं इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, ठीक है, विल दैट बी फास्ट इनफ. सो इंस्टेड ऑफ गेसिंग एंड बिल्डिंग द रॉन्ग प्रोडक्ट जिसका आपको एंड में रिजल्ट एज अ डिजास्टर पता चल सकता है, वी बिल्ड अ प्रोटोटाइप टू फाइंड द ट्रुथ. तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए ये जो मॉकअप वर्जन है या जो प्रिलिमिनरी वर्जन है विच इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप, उसको हम बिल्ड करते हैं. राइट. वर्कफ्लो ऑफ द प्रोटोटाइपिंग. सो द की हियर इज द स्पीड. ठीक है. वी स्टार्ट with the communication to get the gist of the project. ठीक है. To define the like the basic objectives, हम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करते हैं और उससे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट के, although we assume that they are not clear about the detailed requirement, but the basic requirements are identified in the communication. Then we move to a quick design. A quick design में क्या होता है कि we do not worry about the back end database or security yet. We focus on the visible part, जैसे कि जो इंटरफेस है या जो लेआउट्स है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं. We build it fast, show it to the client, ठीक है, and get their feedback and then do it again. So, जैसे आपको इस diagrammatically form में present भी हो रहा है कि it's an iterative loop that clears the fog around the requirement. Fog जो धुंध है ना, जो unclarity है ना, उसको clear करते हैं और repeatedly, iteratively हम ये process perform करते रहते हैं. कौन सा process? To communicate with the customer or the client, to have a quick plan and come up with a quick design, develop the basic thing like the layouts or the interfaces, show it to the user, take the feedback, and keep on communicating and keep on repeating these iterations until you have a clear understanding of the basic requirements. The fate of the prototype. Now, this is very very important. यहाँ पे इस slide में आपको prototype की दो types भी बताई जाएंगी और उनकी nature बताई जाएगी and उनकी contribution बताई जाएगी towards the development of the actual product. So as you can clearly see, we have two types of prototyping: the throwaway prototype and the evolutionary prototype. Now,
here is the big debate. We have a question, और वो question क्या है? Do we keep the prototype or trash it? Like जो prototype हमने build किया है for the clarification of the requirement, उसको हम रख लें या उसको हम जो है वो throw away कर दें. So throwaway prototype कौन सी है? The prototype serves only as a requirement gathering tool and it is discarded once the basic requirements are clear. और जो actual system है उसको हम दोबारा से it is re-engineered from the very scratch. प्रोटोटाइप को हमने बनाया, रिक्वायरमेंट्स को क्लियर किया, इटरेटिवली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के प्रोसेस को फॉलो किया, एंड वंस द प्रोटोटाइप इज डेवलप्ड वी जस्ट थ्रो इट अवे एंड वी स्टार्ट द न्यू सिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच. जो कि जबकि एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में क्या है कि द प्रोटोटाइप इज नॉट थ्रोन अवे, इट इज रिफाइंड and polished until it eventually becomes the actual system. The same system, the same prototype is used to develop the actual system. So Brooks famously argued, as I have previously mentioned, the Brooks famous quote regarding the development, and this time it says, Brooks का आपको एक point of view देते हैं कि Brooks famously argued that the first version is usually too slow or awkward to keep. So in a perfect world, we use the prototype to learn, then throw it away and build the real version with the proper engineering. According to Brooke, जैसे उसने पहले कहा कि the first thing that is developed is never perfect. तो अगर हम इस definition की तरफ जा रहे हैं, so it means कि the prototype has to be the throwaway prototype because once we understand the requirement through the prototype, and as the prototype was an initial version, so it is not going to be perfect as per the Brooks view. So throw it away and start building from the scratch. However, ये भी मैं आपको बता दूं, in reality, some prototypes evolve into final product. So you have to be careful here. In the second, अगर आप उसी को evolve करवाना चाह रहे हैं, evolutionary prototypes need very disciplined coding to stay stable. So you have to be extra careful when you are evolving a prototype into actual product. Advantages: the biggest win is the clarity, right? It is the clarity of requirements which is the biggest advantage of the prototyping. So you stop, like, think about the scenario now. You stop arguing about a text based document and start looking at a working screen. It's a very important point कि आपको एक एक्चुअल रनिंग प्रोडक्ट जो कि बेसिक वर्जन होता है जब वो दिखाई देता है, सो आप टेक्स्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट्स पे आर्ग्यू नहीं करते, रादर यू एक्चुअली टॉक अबाउट something that is actually working. So as a result, in the second point, as it suggests, stakeholders engagement, user gets a feel for the system early, and developers get to build something immediately, which boosts their confidence. So it bridges the gap between the developer's logic and the user's vision. Basically, वो ये बात करना चाह रहे हैं. Users feel involved, and developers get the satisfaction of seeing something run early in the timeline. So जहां एक तरफ आपके यूजर की जो confusions हैं वो clear हो रही हैं, दूसरी तरफ the developers confusions और the developers जो उनकी जो issues उनके mind में हैं, जो considerations उनके mind में हैं, उनके बारे में उनको clarity मिलती है. And finally, reduced risk of failure by testing human machine interaction and technical algorithms early. You avoid building a full system that does not work or isn't user friendly. So at least that would not happen. कि जैसे मैंने आपको initially बताया था कि if you are not clear as a developer, if an algorithm would be fast enough to work in the current scenario with the new system that is being developed, so how would you realize then? जब आप actual develop करेंगे तभी आपको पता चलेगा. But through prototyping, you can realize these important things in advance. Talking about the disadvantages and the risks that are involved. Now, remember, prototyping is a double-edged sword. It can be problematic for two reasons. The first is the fix-it trap. First, let me read it. Stakeholders see a working version and don't realize it is held together haphazardly.
They may demand the prototype be sold as is and leading to a poor long-term quality and maintainability. देखिए, clients often don't understand that a prototype is smoke and mirrors. उनको it is very difficult for us as a developer to make them understand this is not the actual product. This is just built to clarify the requirements. So होता क्या है कि they see a pretty screen and say it looks done, just ship it, give it to me and let me start using it. So if you relent, you are अगर आप उनकी ये बात मान लें, you are shipping a product with no foundation. So the next point is implementation constraint. To get the prototype working fast, engineers might use inefficient algorithm or inappropriate language. Over the time, these less than ideal choices may accidentally become permanent parts of the system. अब होता क्या है कि as an engineer or as a developer, we take shortcuts to be fast because we have to build the prototype very quickly. So जल्दी करने के लिए we sometimes take the shortcuts. Or we may use a inappropriate language or an algorithm which is not best. लेकिन time बचाने के लिए we just quickly do it without thinking कि जी whether this thing is the best one which we are selecting. So agar if we are not careful, those shortcuts become the permanent technical debt. So the rules of the game must be set early. That is, the prototype is a tool for learning, not the final house. So जैसे वो कह रहे हैं ना कि ओवर द टाइम दीज लेस देन आइडियल चॉइसेस, ये जो आपने फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज की है या जो सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम किया है जो कि फॉर द टाइम बीइंग क्विक प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए किया गया है, सो इन केस फॉर सम रीजन इफ अगर आपने ख्याल नहीं रखा एंड इफ दीज choices become a permanent part of the system, so they may result in a very poorly or poorly built system having very poor quality. सो ये दो चीजें आपको मैनेज करनी होंगी while you are using a prototyping model. If you have any question, feel free to ask me. Thank you.